we start with the new topic, that is the status of education in Pakistan. And for that purpose, we see that education has been considered very important as an investment in the future of the country. And because of that, we see that it helps in the achievement of all kinds of human rights. If people are aware of their rights, then they can fight for the achievement of those rights in case they think they are deprived of those rights. So, given the importance of the, let's say, education for the development of the country, we see that in Pakistan, the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan guarantees provision of education to all its citizens. And when we say all its citizens, irrespective of gender, irrespective of religion, irrespective of, let us say, various, let's say, locations and all that. So we see that according to our constitution, and we see in its article 25A1, ये लिखा हुआ है, the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years in such manner as may be determined by law. So that is something which has been, let's say, given, guaranteed by the Constitution of Pakistan. So the citizens can claim it as their right, that they have the right to get education from, let's say, the government side. Also in Article 37B, we see that the state shall remove illiteracy and provide free and compulsory secondary education within minimum possible period. अब इसमें कहा है कि इलिटरेसी को रिमूव करेंगे, देन प्रोवाइड फ्री एंड देन कंपल्सरी एजुकेशन. यहाँ पर आ गई, एक तो फ्री एजुकेशन है, पहला था कि राइट ऑफ एजुकेशन, नाउ इट इज़ फ्री एजुकेशन एंड देन देर इज़ कंपल्शन on the from the side of the government that every family, the parents will send their children to educational institutions. और ये जो compulsory education है, this will be up to secondary level. उसका पीरियड डिटर्मन नहीं किया कि ये कब तक ये फ्री और कंपलसरी होगी, वो ओपन रखा है. और उसमें यही कहा गया है कि इट विल बी टेकन केयर ऑफ विद इन द पॉसिबल, लेट्स से, टाइम. So that is something which is given in the constitution. अब उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स आती हैं, और एक 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है. उसमें एजुकेशन जो है, इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात भी हो सकती, शोबाजात भी हैं, कि एजुकेशन हैज़ बीन डिवॉल्व टू द प्रोविंसेस. और अब provinces are responsible for looking after the educational aspects of the individuals, particularly up to the intermediate level. तो ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात है. इसके साथ फिर हम आइसोलेशन में नहीं हैं, हमारा कांटेक्ट है द इंटरनेशनल लेवल, और इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारी बातें होती हैं. And Pakistan makes all kinds of commitment to the international, let's say, agencies, and there we see that Pakistan becomes signatory to so many, let's say, commitments. और उसमें बात आ रही है कि पाकिस्तान इज सिग्नेटरी ऑफ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग एजुकेशन. और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थी 1948 में, और उसमें था द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. दूसरी है एजुकेशन फॉर ऑल, दैट इज़ इट केम इन 1990. देन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स
ये 2000 में आए थे। ये था कि भाई ये 2015 तक ये अचीव हो जाएंगे, वो अचीव नहीं हुए, तो उसके बाद फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात आ गई। we see that they replace the MDGs. So SDGs were developed to replace the MDGs. So education has been directly or indirectly addressed in all these commitments. So we see that ये जो SDGs हैं जो लेटेस्ट हैं, इनमें कोई 17 ग्लोबल गोल्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस ने सेटअप किए हैं, और द ब्रॉड गोल्स आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर, अगरचे हर के टारगेट्स जो हैं, गोल्स जो हैं, वो अचीवमेंट के फ़र्क हैं। तो इनका मकसद ये है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. So that is how we see that we have to look after these SDGs. So SDGs framework does not distinguish between developed and developing countries. Instead, the goals apply to all countries. और इन goals में जो goal number 4 है, it relates to quality education and to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. एक तो क्वालिटी एजुकेशन की बात है, देन लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात इसमें आ रही है कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ should be available, should be provided to the people of the country. और इस कमिटमेंट के जो सिग्नेटरीज हैं, they are encouraged to develop local framework to achieve international commitments according to the requirements and the resources. रिक्वायरमेंट तो अपनी जगह पर हैं, रिसोर्सेज हर कंट्री के फ़र्क हो सकते हैं, तो उसके मुताबिक फिर देन कुछ ओपनिंग दी गई है कि अपने रिसोर्सेज के मुताबिक अपना फ्रेमवर्क बनाएं, so that these goals could be achieved.